દેવાયત ખવડ આણંદ સોજિત્રા ખાતે ડાયરામાં પહોંચ્યા। ગઈકાલે રાત્રે ડ્રાઈવર કાર લઈને અમદાવાદ તરફ આવી રહ્યો હતો ત્યારે હુમલો થયો। હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ નથી નોંધાઈ। અનુમાન છે કે કાર્યક્રમમાં હાજરી ન આપતા દેવાયત ખવડ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે, જોકે હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ નથી નોંધવામાં આવી। દેવાયત ખવડનું કહેવું છે કે બંને કાર્યક્રમોમાં મેં હાજરી આપી છે। घटना अंगे देवायत खवड़नो खुलासो। देवायत खवड़े बंने जग्याना विडियो वायरल कर्या, बंने कार्यक्रमोमां हाजरी आपी छे तेवुं निवेदन आप्युं। सनाथल गामना लोक डायरामां लोक गायक देवायत खवड़ हाजर नहीं रहता ककड़ाट थयो अने ए मामले देवायत खवड़ना कार पर हुमलानी घटना बनी। बात कंईक एवी हती के 20 तारीखे लोक डायरानुं आयोजन हतुं सनाथल गाममां, परंतु लोक गायक देवायत खवड़ जे छे ते पोते हाजर रह्या न हता अने त्यारे देवायत खवड़नी कार जे त्यारे ज्यारे तेमनो ड्राइवर लईने अमदावाद तरफ आवी रह्यो हतो त्यारे तेमनी कार उपर हुमलो थयो। एक व्यक्ति साणंदनो छे अने बे व्यक्ति जे छे ते सनाथल गामना होवानी विगत सामे आवी रही छे। आ हुमलाखोरो जे छे ते देवायत खवड़नी कारने लईने फरार थई गया होवानो पण आक्षेप थई रह्यो छे। त्यारे हाल समग्र मामले चांगोदर पोलीसे फरियाद लीधी छे अने समग्र मामले तपास शरू करी छे। केमेरामेन पंकज मकवाणा साथे संजय टांक, न्यूज 18 गुजराती, अमदावाद। घटना अंगे देवायत खवड़नो खुलासो। देवायत खवड़े बंने जग्यानो विडियो वायरल कर्यो, बंने कार्यक्रमोमां हाजरी आपी छे तेवुं निवेदन आप्युं। आयोजकोना घरना सीसीटीवी फूटेज चेक करो। 2 महीना पहेला पण संबंधमां डायरो कर्यो हतो। सनाथल आयोजकनी रजा लीधा बाद पीपळाव प्रोग्राममां हाजरी आपी हती। बात करवी है कि मीडिया मार्केट में फरे है कि देवायत खवड़े 2 डायरा लई अने एक डायरा में हाजरी न आपी, बीजा डायरा में हाजरी आपी। एना लई अने विडियो खास हूँ आपना सुधी पहोंचाडवा माटे शेर करूं छुं कि जे डायरा में मैं हाजरी आपी ए आयोजकना घरे सीसीटीवी फूटेज चेक करो। सनाथल पहला मैं हाजरी आपी सनाथल में 8 થી 9:30। 9:30 मैं आयोजकनी रजा लई अने पीपळा प्रोग्राम जवा माटे निकळ्यो। मैं नथी खोटुं कर्युं के नथी पैसा लीधा आयोजक पासेथी। आनी पहला पण एनो डायरो कर्यो 2 महीना पहला एमना भत्रीजाना लग्नमा, त्यारे पण मैं रूपियो लीधो नथी, खाली मात्र ने मात्र संबंधमां। तो जे पण मैं विडियो फरतो जोयो એટલે ખાસ સ્પષ્ટ કરવા માટે કે એટલી ખબર મને પડે છે ફિલ્ડમાં કે ડાયરો લીધા પછી ક્યાં જાવું ક્યાં ન જાવું, એટલા માટે સ્પષ્ટ કરું છું કે એક પણ રૂપિયો લીધા વગર સંબંધ જાળવવા કાર્યક્રમમાં મેં હાજરી આપી છે। છતાં પણ જો કોઈને એમ થતું હોય કે હાજરી નથી આપી તો એ વાત બહુ બિલકુલ ખોટી છે। જે પણ મિત્રો જે પણ વિડીયો વાયરલ કરે તો એને ખાસ નોંધ લેવી કે પહેલા જાણી જોઈ અને વાત સાચી શું છે એ પબ્લિક સુધી મૂકવા નમ્ર વિનંતી।